Assalamu alaikum. Welcome to my channel Case Law Study. Today I will discuss about the doctrine of sinker which is used in preemption suit. A doctrine of sinker means where a stranger has been impleaded or has been associated as a plaintiff or as a defendant in preemption suits. So now question arises, who is a stranger? A stranger is a person who has inferior right of preemption or who has no right of preemption. Now there are two aspects of doctrine of sinker. Before this, the policy of law of preemption is to keep out the stranger. The doctrine of sinker is fully applicable in preemption suit. This point is discussed in PLJ Pakistan Law Journal 1981 Lahore 378. Now the first aspect of doctrine of sinker is where preemptor associates a stranger with himself or implead a stranger with himself as a plaintiff. Now where a plaintiff having the right of preemption associate or implead with him a person stranger having no preemption right or inferior right of purchase of suit land under the principle of sinker, he entitle himself from his right of preemption. Suppose plaintiff has right of preemption but he associates a person who has inferior right to inferior right of preemption to defendant, then plaintiff himself disentitle himself from the right of preemption. इस सूरत में ये होगा कि जो एक प्लेंटिफ ए है और उसने साथ प्लेंटिफ बी स्ट्रेंजर एसोसिएट है, लेकिन प्लेंटिफ जो बी है उसका जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो डिफेंडेंट से कम है, उसके प्रीएम्पशन के हक से कम हक है स्ट्रेंजर का, लेकिन प्लेंटिफ ए का जो हक है प्रीएम्पशन का वो तो या डिफेंडेंट के बराबर है या उससे ज्यादा है, लेकिन ड्यू टू एसोसिएटिंग अ स्ट्रेंजर विद हिमसेल्फ प्लेंटिफ जो है वो भी प्रीएम्पशन के हक से उसका हक भी खत्म हो जाएगा, उसका हक बाकी नहीं रहेगा सिंकर के प्रिंसिपल के तहत. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज where defendant associate a stranger. Now this is discussed in PLD 1995 Supreme Court page 482. The previous principle is discussed in judgment as already mentioned in the previous slide. Now this second aspect is discussed in PLD 1995 Supreme Court page 4482. Is where defendant vendee having an equal or superior right of preemption associate a stranger person having an inferior right of preemption than the preemptor. अब जो डिफेंडेंट ए है उसका जो हक है प्रीएम्पशन का वो या तो प्रीएम्प्टर के बराबर है प्लेंटिफ के या उससे ज्यादा है, लेकिन जो उसने अपने साथ बंदा एसोसिएट किया उसका जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो या तो इंफीरियर है प्रीएम्प्टर से या है ही नहीं है बिल्कुल. तो अब क्या होगा? Now in this case, then the rule of sinker will apply and preemptor suit decree. अब जो प्लेंटिफ का दावा डिक्री हो जाएगा, जमीन उसको मिल जाएगी या जो भी प्रॉपर्टी होगी. Unless the impugned sale is divisible. अगर जो डिफेंडेंट ने जो वो प्रॉपर्टी मिल के ली है, अब एक डिफेंडेंट का हक तो बनता है लेकिन दूसरा जो स्ट्रेंजर है उसका नहीं बनता, अगर वो प्रॉपर्टी डिविजिबल है फिर तो स्ट्रेंजर की हद तक वो जो है वो प्रीएम्प्टर को डिक्री हो जाएगा और जो डिफेंडेंट के हद तक है वो डिक्री नहीं होगा. ये
इसमें इस जजमेंट में ये कहा गया और ये इसका प्रिंसिपल है। वेयर नॉट ओनली द शेयर ऑफ ईच वेंडी इज स्पेसिफाइड, अब उस डिविजिबल की आगे इलस्ट्रेशन उसको डिफाइन किया जा रहा है कि जहां डिविजिबल मीन कि उनका उन ईच वेंडी का शेयर भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, बट द अमाउंट पेड टुवर्ड द प्राइस, और जो उन्होंने कंसिडरेशन पेड की है उस प्रॉपर्टी की, उस परचेज की, वो भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। अब इसी जजमेंट में आगे ये कहा गया कि ट्रांजैक्शन इज रिगार्डेड एज इनडिविजिबल if the purchase money for sale is paid in lump sum without specification of the amount paid by each vendor, जहां ये स्पेसिफाइड ही नहीं है कि ये अमाउंट कितनी एक डिफेंडेंट ने की है और कितनी दूसरी डिफेंडेंट ने पे की है, तो उस सूरत में होगा कि उस सूरत में यही समझाएगा कि इंडिविजिबल है और सूट्स और प्रॉपर्टी सारी की सारी डिक्री हो जाएगी प्रीएम्प्टर के हक में। दो द शेयर्स टू बी टेकन बाय द वेरियस वेंडी हैज बीन स्पेसिफाइड इन द डीड, अगरचे उनके शेयर स्पेसिफाइड हैं लेकिन अमाउंट पेड स्पेसिफाइड नहीं है, तो फिर भी ये इंडिविजिबल इसको समझा जाएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।